They say if you want to understand the pulse and the heartbeat of the city, it is only on the streets that you can find it. The amount of eggs varieties that he makes here is unbelievable. And if you really want to be surprised, you know how many eggs get sold in a day? The outside of the samosa and the inside of the samosa served separately, which is fantastic because I really like both parts. ये है पालीवाल जी और इनकी कचौरी देश भर में फेमस है, सिर्फ उदयपुर में नहीं, देश भर में फेमस है। ओह जस्ट गॉड, क्या हो गया मुझे नाश्ते पर गुलाब जामुन। इतना खा गया हूँ, हिंग का पानी पीने के बाद पूरा पच गया। अब और खाते हैं। When I think of Udaipur in Rajasthan, I think of a city with glistening lakes on one end, the mighty Aravalli mountains on the other, and in between, thousands of years of history, royal palaces, and small streets and markets full of food. So on Khaane mein kya hai? We are in Udaipur and we are going to explore the street food of Udaipur. तो आइए मेरे साथ और पूछते हैं कि खाने में क्या है। तो मैं जगदीश मंदिर के बिल्कुल सामने हूँ। दिस इज कॉल्ड जगदीश रेस्टोरेंट एंड इज फेमस फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट दो चीजें मैं यहाँ टेस्ट करने वाला हूँ, एक पोहा और दूसरा समोसा। कचौरी बाद में खाएंगे। They say if you want to understand the pulse and the heartbeat of the city, it is only on the streets that you can find it. And that's exactly how I found my samosa. This is a samosa, it's like a samosa chaat, full samosa which has been crushed, mixed with dahi and save, chutneys. And the staple standard breakfast here. I'm a lover of the samosa by itself. I really like Punjabi samosas. The masala inside is fabulous, aloo ka masala. If given a choice, I would eat only the samosa. But this is now a daily breakfast for a lot and I thought I must taste it. चलो, जैसे कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। Now as you know, poha is a staple Maharashtrian breakfast. But a city like Indore made poha really famous. Indore is close to, well, Indore is Madhya Pradesh, this is Rajasthan. Poha has travelled all the way to Udaipur. Let me see if there's any difference between the poha I eat back home in Mumbai and the poha over here. On the face of it, I can see there is save and pyaz and all on top of it. But the poha is really soft and flaky. There's a little sweetness to it because I think they've added sugar. The crunch on top of it because of the save and raw onion. Interesting. लेकिन है बहुत अच्छा। तो ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। अब जाकर नाश्ता करते हैं। क्यों? थोड़ा समोसा, थोड़े पोहे और बहुत सारा चलने के बाद मैं बैठ गया हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद क्या खाऊं। I've heard that wherever you go in Rajasthan, especially Udaipur, the kachoris are to die for. तो यहाँ एक पालीवाल कचौरी करके है, ढूंढते हैं कहाँ है वो, and let's go and eat some nice kachoris. चलिए। तो ये है पालीवाल जी और इनकी कचौरी देश भर में फेमस है, सिर्फ उदयपुर में नहीं, देश भर में फेमस है। मैं बम्बई में सुन के आ रहा हूँ कि अगर उदयपुर जाओगे तो पालीवाल की कचौरी खानी चाहिए। तो ये कब किसने शुरू किया है? ये हमने किया था, हमको हो गए 43 इयर्स हो गए। हाँ, और शुरुआत सिर्फ कचौरियों से शुरू हुआ? पहले हमने चाय शुरू की। चाय? हाँ।
मैंने चाय बनाना सीखा बढ़िया कि चाय अच्छी कहाँ बनती, तो फिर मैं इंदौर गया था, वहाँ पे राजवाड़े में चाय बनती थी। वहाँ से हमने चाय शुरू की। चाय हमारे उसके बाद में फिर हमारे फादर और अंकल वो बनाते थे कचौरी, उनके साथ सीख के फिर हमने खुद ने स्टार्ट कर दिया। हम चारों भाई, 1 2 3 चारों भाई। तो ये कचौरी जो आपकी है, अंदर क्या होता है उसके? उसके अंदर होता है मूंग की दाल। मूंग की दाल। पहले बेसन को सेकना पड़ता है हाँ। और उसके बाद में ऊपर से वो मूंग की दाल डालते, रात को भिगो देते। हाँ। फिर उसके साथ में फ्राई हो जाती, तो उसका दाल का बहुत टेस्ट आता है। दाल का टेस्ट। सुबह का वक्त है, गरम गरम कचौड़ी खाई जाए पालीवाल की। So you saw this kachori freshly made with dal inside, and he's flying it up in the air and makes a bit of a theatre out of the whole thing. It's great fun because it attracts people. But the key is, does it taste good? We've got two kinds of chutneys that have gone in, imli ka chutney and pudina or hare dhania ki chutney. You know, the key to the kachori, and honest to God, is the freshness. The fresher the kachori, the better it will taste. And the fact that they wake up in the morning at 4 in the morning and start preparing the masala and the atta, and at 7 o'clock there's a crowd over here. What is interesting is that masala inside has a little bit of soft, which gives this real fresh flavor. Along with the kachori, there's one more thing over here which is quite famous, which is called the aloo bada. I'm intrigued to find out whether the aloo bada is anything like the batata vada, because it means the same thing. Let's try it. तो बटाटा बड़ा जैसे बाहर का बेसन का होता है, बाहर बेसन का होता है। हाँ। और अंदर आलू, अपने बाकी सब चीज होते हैं। आलू होता है, मिर्ची होती है, धनिया होता है, पुदीना होता है और मटर सब कुछ। होते हैं। मटर भी होते हैं। मटर हो। Okay, that's one difference. But it seems like a Maharashtra batata vada. Nice. But I'll give the kachori top marks. Even this has been crushed, mixed with two chutneys and served. Hot, fresh. But if I was to choose between the aloo vada and the kachori would come up tops. Gulab jamun. अभी सुबह सुबह नाश्ता खाने के बाद, वैसे तो ये जो आपके इसमें गरम हो रहे थे गुलाब जामुन देखकर थोड़ा टेम्पटेशन हो रहा था, लेकिन मैंने अवॉइड किया, लेकिन थोड़ा टेस्ट होगा। गरम गरम गुलाब जामुन, फैंटास्टिक। क्या हो गया मुझे नाश्ते पर गुलाब जामुन। If you want really good food, you've got to work hard for it. So we are just off the Ghantaghar in a small lane. It's called Rupji Nasta Center, and you get something called masala papad. Now, it's not masala papad like you know it. It's a different kind of masala papad. So let's go inside and check out what else there is to eat besides this masala papad. Rupji Nasta Center. ओह नमस्ते जी। अब ये आपका जो मसाला पापड़ है वो बहुत सुना है उसके बारे में, लेकिन वो क्या है मैं जानता नहीं हूँ। ओपन समोसा है। अच्छा, ओ ओके। पपड़ी अभी पापड़, उसके साथ मसाला टेस्ट करिए आप। अरे 100% उसी के लिए आए हैं हम लोग, टेस्ट करने के लिए। तो ये है मसाला पापड़, which is actually the outside of the samosa and the inside of the samosa served separately, which is fantastic because I really like both parts. And you always eat a samosa and you're dying to eat the end, which is crisp. This whole thing is crisp. Go for it, yeah. Right? Crisp. With this masala. So this is literally
all the goodness of a samosa, the crispness of a samosa. Oh, 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 oh. Oh, this is good. And it's served with the curry. Most importantly, this is what makes it. This spicy mixture with aloo and green peas and masala. Let's try and see how it tastes with the curry. Here we are. So you got the crispness. This is like literally like a Michelin star dish. It's got textures, flavors, crispiness, sweetness, sourness, spiciness, saltiness. It's a complete meal. एक असली लोकल की तरह खाना है कि ऐसे खाते हैं. When in Rome, be like a Roman. When in Udaipur, be like a Maharaja. After eating so much food, you have to do a bit of walking. So I have walked and walked and walked. We've left the Jagdish Mandir area and we've come out of the old city to a place called Suraj Pol. Over here, we're going to eat एक पताप चाट करके कुछ है, जहाँ कुछ अजीब सा चाट मिलता है, कुछ हिंग के पानी के साथ कुछ मजा करके चाट खाते हैं. So let's go to पताप चाट and check out what exactly is over there. नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते. क्या आपका जो चाट की तो चर्चे हर जगह है. ये आप कुछ क्या बोलते हैं उसको, हिंग का लेके कुछ करते हैं, तो क्या बनाते हैं? हिंग दाल की कचौरी. तो मैं खाऊंगा फिर, लेकिन वो ऊपर से हिंग का पानी वगैरह डालते हैं आप? पापड़ी चाट बनाएंगे. हाँ, कचौरी तो बहुत सारी खाते होंगे. तो ये पापड़ी चाट जो है वो पहले चटनी में आप डुबोते हो पापड़ी को, हाँ, फिर उस पर दही जाता है और ये हिंग का पानी जाता है इसके ऊपर. तो ये खाने के बाद ऐसे आना है आपके पास. खाने के बाद ये पानी जरूर पीना. अच्छा, पहले खाते हैं फिर उसके बाद पानी पीते हैं. चलो, एक आदमी कितना चाट खा सकता है? ये एक चाट जो है ना, इसमें कितनी पापड़ियां हैं देखो. 1 2 3 4 5 6 7. और फिर what they've done is they've taken the papdi, they've dipped it, soaked it in the chutney, then dahi, and then masala and hing ka pani. चटनी मीठी है, दही खट्टा है और हिंग का जो स्वाद आता है ऊपर वो अनयूजुअल है. पापड़ी तो पापड़ी है, क्वाइट टेस्टी. मुझे ये सब खत्म करना है और जो बच जाएगा उसमें मुझे हिंग का पानी पीना है. कोशिश करता हूँ. लेट मी सी हाउ मच आई कैन ईट दिस. ये खत्म हो गया. अभी इसमें लेट्स गो देयर एंड फाइंड आउट. अनबिलीवेबल दिस इज. इतना खा गया हूँ, हिंग का पानी पीने के बाद पूरा पच गया. अब और खाते हैं. How can we end an episode of breakfast without anda? So I'm here in a place called the Egg World. The little story behind this Egg World in Udaipur, Jay Kumar is the owner. His father started this on one cart several years ago, and today it's a roaring business. The amount of eggs, varieties that he makes here is unbelievable, extremely creative. And if you really want to be surprised, you know how many eggs get sold in a day?
On an average day over here, 1500 अंडे. How many kilos of butter? 20-25-30 kilo butter. How much cheese? Same amount of cheese. So this is what I have decided to eat over here. 3 kinds of egg preparation. Their bhurji made out of boiled egg is supposed to be spectacular. He on an average makes 100 egg bhurji. There is something called egg nice. And this is the tandoori omelette. Ever heard of it? Tandoori omelette? What's that? And then we'll finally eat the bhurji, which is made out of boiled eggs. Chalo, start karte hain egg nice se. Egg nice. Nice. Double fried egg with masala gravy inside, crisp, and then topped with cheese and all these sauces. This is more than a full meal, huh? So, now to try the tandoori omelette. You can see this is an omelette and there's tandoori gravy inside. What I also like about their omelettes is that they are nicely made golden and crisp. Of course, everything is topped with sauces, mayonnaise and cheese. The cheese makes all the difference, okay? It adds a certain amount of richness to the omelette. There's spices inside. The egg, of course, but my eye is on that bhurji. I know that while all this is great, that bhurji is what I'm going to really like. And I don't know if you know this, but boiled eggs is my favorite form of eggs. I can eat boiled eggs in any form. In fact, the egg itself is, in my book, probably the most versatile kind of food ever. Think about it, no? You can make eggs, you can make boiled eggs, you can make omelets, you can make scrambled eggs, you can make macaroons. Oh, you saw how this was made. It got boiled eggs, which are chopped, pyaz, tomato, the works. So, I think this is a good way to end this episode in Udaipur. What do you think? Huh? तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ राइट टू अस, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है. Now the eggs, the boiled egg. I like this the most. Okay? And it's a bit contrary, this whole episode. I mean, we've eaten like pure raste ka vegetarian food, which is kachori and chaat and all, and then we come and ended up with this fascinating mix of spices and eggs. But for me, the bhurji is the best. The bhurji, nice, spice, boiled egg, bhurji, fabulous. But this is a proper true Khaane mein kya hai, on the street. This is the way I like it. Yeah. I belong on the streets. I wish the streets were air conditioned, but in Udaipur there's no problem. It's thanda, hawa thanda hai.